Hello doctors, welcome back to my channel. So I'm back after a very long time because I was really very busy with the registration process. So today I'm going to discuss with you a planner for the upcoming December FMG exam. It can be used by any student if you have not completed all the 19 subjects yet, or you have not touched any subject, like you have not started preparing for the exam yet. So I have divided this into the first read, the first revision, and the second and third revision. So the first read will be in 3 months, like May, June, and July. So in these 3 months, you have to complete the first read. The meaning of the first read, it means that you will go through the whole content, whichever platform you are using. You will go through the content once, try to understand the concepts. So this you will do in 3 months, May, June, July. 90 days are more than enough to complete all the 19 subject in the first read. It is more than enough. You should be able to complete it. And I have also included some buffer days where you can just complete the task if you are not able to complete in the given time. Then after that, in the August and September, you will be doing your first revision, and in October and November, that is second and third revision. So this is the planner. So मैंने divide किया है it into the morning session, afternoon session, and the night session. So I have given it subject wise and date wise. You try to complete in that given time. So first you will take anatomy. Anatomy you will complete from 3rd of May till 7th May in 5 days. 5 days complete anatomy with QBank solving. If you have any platform, any app, you can do it from there, or just try to get the revision videos of Dr. Azam sir. They are somewhere, they are available also on Telegram channel or something. So that there are total 9 videos, and he has completed everything in that, and they are more than enough for the FMG exam. So the time slot, you will do anatomy from 10:15 till 2. From 2 to 3 you will have your lunch break. Then from 3 to 6 same, continue anatomy. And what you have to do in morning session, that I will tell you at the end of this video. It is at least 6 to 7 hours, so try to complete the videos, to watch the videos and make notes in the 6 hours, and give 1 hour for MCQ solving. Then after anatomy you will take surgery. Surgery is one of the very high yield subject. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इसमें से मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस आते हैं. इन दिस जून FMG ऑल्सो देर वेर मेनी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे. एंड येस, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम staging of the cancer, and you have to complete surgery in 7 days. So this is the high yield subject, that's why मैंने यहाँ पे 7 days दिए, from May 8 till May 14. Try to complete it in 7 days. देन ENT 5 दिन में ख़त्म कर लो. ENT इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं. सो इन 5 days आर मोर देन इनफ टू कंप्लीट ENT. आफ्टर ENT यू विल टेक OBGY ख़त्म कर लो इन 8 days. So it is also the important subject like surgery. You get maximum 30+ questions from OBGY. So I have given it 8 days. So from May 20 till 27, 8 days में ख़त्म कर लो OBGY. You can use any platform. I studied from Marrow, so I studied it from Sakshi ma'am. So OBGY 8 days में ख़त्म हो जाना चाहिए. देन जो मैंने ये शाम का टाइमिंग रखा है 7 to 10, अब इस टाइमिंग में तुम एक कौन सा भी स्मॉल सब्जेक्ट लोगे, एंड यू विल ट्राई टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट. सो मैंने एनेस्थीसिया, डर्मा और साइकेट्री, ये 3 सब्जेक्ट रखे इन द मंथ ऑफ मे. सो तुम small subjects, like one small subjects should not take more than 12 or 15 hours. It is more than enough. So जो मैंने ये शाम का टाइमिंग रखा है एनेस्थीसिया के लिए, लाइक जब तुम एनाटॉमी कर रहे हो 3 से 7 मई तक, सो उस टाइमिंग
like side by side you will complete anesthesia. You can, if you have not touched it, अभी तक टच नहीं किया anesthesia, ओपन भी नहीं किया है, so you can stick to the revision videos. Revision videos are more than enough for small subject. और with the revision videos try to complete the whole Q bank. कुछ भी extra points है add it to your notes, and don't forget to do the PYQs. PYQs are very important. कोई भी subject हो, स्टार्ट करने से पहले गिव 1 आवर टू PYQs में जो भी टॉपिक तुम्हें दिख रहे हैं वो टॉपिक को अलग से नोट डाउन कर लो, एंड देन व्हाइल यू आर डूइंग द मेन सब्जेक्ट, अगर वो टॉपिक दिख जाए देन यू विल डू दैट टॉपिक वेरी नाइसली, एंड वो टॉपिक के वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस सब टॉपिक्स तुम ठीक से कवर करोगे, एंड यू विल स्टार मार्क दैट टॉपिक. इन द सेम वे यू विल डू इट फॉर स्मॉल सब्जेक्ट ऑल्सो. बिफोर स्टार्टिंग you will do the PYQs, you will note down the topics. मोस्टली स्मॉल सब्जेक्ट में से रिपीटेड टॉपिक्स ही पूछते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स ही है जो बार बार पूछते हैं. सो PYQs आर मोर हेल्पफुल फॉर स्मॉल सब्जेक्ट. सो you will do side by side simultaneously with this main big subjects. You will complete this 3 subjects also: anesthesia, derma and psychiatric. If you complete it early, then you can just use this time to do this subject, or like to give extra time for this subject. If you can complete it early, you should complete it in maximum 3 to 4 days, like 3 days or 4 days for anesthesia, 3 days for derma, and psychiatric also 3 days, because these are easy subject. You get easy and direct questions from this small subject, and but don't leave the small subject. I have seen students जो small subject important नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं ये बोल के छोड़ देते हैं, but these are the subject that help you to cross that 150 point. That's why you should not leave these subjects. Just try to complete it from revision videos, Q bank, PYQs, more than enough. So इन द मंथ ऑफ मे मैंने 4 days रखे बफर. इफ़ लाइक कभी कोई डे मिस हो जाए, या फिर इफ़ यू फील दैट यू शुड गिव एक्स्ट्रा डे टू सर्जरी और OBGY और एनाटॉमी, एनी सब्जेक्ट, सो जस्ट यूज दिस 4 days इन दिस सब्जेक्ट. सो इन द मंथ ऑफ मे यू आर डूइंग 7 subjects. 7 subjects मे में कंप्लीट हो जाने चाहिए. मैंने ये स्मॉल सब्जेक्ट साइड बाय साइड इसलिए रखे हैं क्योंकि वी ऑफन फील स्ट्रेस्ड आउट कि हमें 19 सब्जेक्ट है, कैसे हो गया, अभी एक ही सब्जेक्ट चालू हुए, 2 ही सब्जेक्ट ख़त्म हुए, सो हाउ यू विल कंप्लीट दैट 19 सब्जेक्ट. वी फील दैट बर्डन. सो आई यूज टू डू द सेम. आई यूज टू डू 1 main subject and side by side the small subject. So this at least gives you some motivation, it boosts your confidence, and yes, you will complete maximum subject in less time. So try to complete this subject in this given time, and तुम मे के मंथ में सर्जरी एंड OBGY ये 2 important subjects ख़त्म कर रहे हो, so that should decrease your burden a little bit. Then in the month of June you will do physiology in 6 days, from June 1st to June 6th. complete physiology in 6 days. And just remember, 1-liner questions नहीं आते physiology से. You will get the big statements where you have to choose the correct and the incorrect statement about the particular mechanism. So you have to do physiology neatly and deeply, because अगर physiology समझ में आएगी तभी you will understand the pathology and pharmacology. So give 6 days to physiology and complete it. Then biochem you complete in 4 days. Try to do it from Dr. Azam sir. There are some like 4 revision videos which are there, so try to complete it from that videos. Then pediatric you will do from 11th of June to till 15th June. That is 5 days, more than enough. And just remember, milestones याद करने के लिए मत बैठो. You will never remember the milestones. Milestones एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन से पहले पढ़ते रहना है, because not even pediatrician remember the milestones. So don't waste your time to just mugging up the milestones now only. You have to do it before the exam, 2-3 days before the exam. That's it. Then ophthalmology you will give 6 days to ophthalmology, from June 16 till June 21st. Ophthalmology is also a very important subject. Give maximum focus on the neuro part from ophthalmology: retina, cataract, glaucoma,
and also the small topics, but give maximum focus on these topics, especially the neuro part. उसमें से ज़्यादा questions आए थे इस बार जून में. Then after that, from June 22nd till 27th you will do pharma. Pharma is also a very important subject. That's why you have to do physiology properly. अगर physiology ठीक से नहीं की हो, then you will get problem to do pharma. And pharma is a subject which has lots of mechanism and lots of drugs. So that's why pharma course 6 days दिए है. For a revision purpose, I suggest you to use this book, One Touch Pharmacology by Dr. Ranjan Kumar sir. So this is the best book for pharmacology because I have used this book for my revision, and there is also one video which I have made on this book, the review of this book. So you can check that video. The link is in the description box. In the month of June, I have given 3 days as a buffer days, so you can use these 3 days anywhere in any subject. And तुम टाइमिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. अगर बायोकेम तुम्हारा जल्दी ख़त्म हो सकता है, सो यू कैन कंप्लीट इट इन 3 days. अगर पीडियाट्रिक 4 days में ख़त्म कर सकते हो, सो यू कैन कंप्लीट इट. सो मैंने अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ आई हैव गिवन दिस डेज, बट यू कैन चेंज दिस डेज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. Then next is this timing, where in the month of May you were doing the small subjects. So ये जो 7 to 10 का टाइमिंग है, इस टाइमिंग में तुम 2 सब्जेक्ट करोगे जून में. One is pathology, other is microbiology. These 2 subject, if अगर अभी तक टच नहीं किया है और it is difficult to you, so there is a crash course which is available on Unacademy platform. It is free. You can use that crash course by Preeti ma'am. She has completed the pathology in 19 days and microbiology in 12 days. So you can do this 2 subject from that crash course. It is more than enough. मैंने खुद ये crash course use किए हैं. It has helped me in best way. So you can trust this crash course. एंड अगर अभी तक हाथ नहीं लगाया ये 2 सब्जेक्ट्स को, सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट क्रैश कोर्स. मैंने क्रैश कोर्स के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो टू. द लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यू विल स्टार्ट पैथोलॉजी फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम June 1st till June 19. 1 वीडियो ईच डे 1 वीडियो करना है in 19 days. Total 19 videos है, 1 video each day कर लो. Then after that for microbiology you will give 12 days, that is from June 20 till July 2. Same 1 video each day, complete your microbiology. अब ये 3 दिन में अगर क्रैश कोर्स तुम यूज़ कर रहे हो इस वीडियो से, साइड बाय साइड you will do the Q bank of whatever app you have. You will complete the Q bank, you will do the PYQs. Then in July you will start with PSM from July 1st till 8th of July in 8 days. अब PSM is also very high yield subject. बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. And PSM is more kind of mugging and remembering things. So PSM में कोई टॉपिक्स है जो नहीं याद हो रहे. So do one thing, just take down some sticky note, write down that topic which you are not able to remember and stick it down on your wall. And every day you just go through that every day, and in that way you will remember the topics. Next फिर 3 small subject है. So give 5 days to radiology, ortho 14 till 17 and forensic from 18 to 23 days में ख़त्म कर लो. Then in this way you will finish all this subject. And same way when you are doing the PSM, radio, ortho in the month of July, you will do the first revision of pathology and microbiology. So here you will do from July 3 till July 17 2 videos. और 2 के स्पीड पे देख लो या फिर जस्ट गो थ्रू द PDF. 2 videos each day. पहले कर लो पैथो की रिविजन till July 17. Then from July 18 till 31st of July 12 days में you will do microbiology. This will be your first revision. 1 video each day, and here also you will do the Q bank and the PYQs. So then
In this way you will complete all the 19 subject till the end of July. देन जुलाई में मैंने 11 डेज रखे हैं बफर डेज, कहीं भी कम ज़्यादा हो या फिर यू हैव टू ऐड समवेयर सम एक्स्ट्रा डेज. फार्मा में अगर एक्स्ट्रा डेज ऐड करनी है या फिर PSM में और एनी सब्जेक्ट, सो जस्ट यूज दिस 11 डेज एज अ बफर डे. देन देन नेक्स्ट इज मेडिसिन. अब मेडिसिन के लिए मैंने ये टाइमिंग रखा था मॉर्निंग का 8 to 9:30. सो इस टाइमिंग में तुम मेडिसिन करोगे. डू 1 वीडियो और डू टॉपिक वाइज और डू 2 वीडियोज़ फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म. अब मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कितना भी कर लो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द होल सब्जेक्ट, नहीं कर पाओगे. सो जस्ट गिव 2 hours or 90 minutes each day and complete some topics, some videos, Q banks in that given time. So I have seen students who try to complete medicine in 10 days, in 20 days. नहीं हो पाता है. इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट एंड यू इवेंचुअली यू विल गेट बोर्ड. मैंने खुद ट्राई किया था ये मेडिसिन 10 या 12 डेज में कंप्लीट करने का, नहीं हो पाया. इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो दैट्स वाई आई यूज टू डू मेडिसिन एवरी डे from 8 to 9:30 or from 8 to 10. So just do it for 1 or 2 hours. Complete some topics. Do it system wise like cardiovascular. उसके बाद do endocrine, GIT, rheumat, renal, respiratory, nervous system. So इसमें से cardiovascular, GIT, renal and nervous system and yes also endocrine सभी important है. So just try to complete it in this timing. सो 3 मंथ्स है. 3 मंथ्स में तुम्हारी मेडिसिन का फर्स्ट रीड भी हो जाएगा एंड आई गेस बाय द एंड ऑफ जून यू शुड कंप्लीट दिस ऑल द सिस्टम. अगर इसको तुम रोज़ दो घंटे कर रहे हो, सो बाय द एंड ऑफ जून यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट. उसके बाद कीप द सेम टाइमिंग एंड सेम बार रिवाइज करो इसको. सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंप्लीटिंग medicine in 10 days and 12 days. It will be a waste of time. So best way is to do at least some few topics from medicine every day and that will also boost your confidence ki medicine is important and you are not leaving that subject. Leave to karna hi nahi hai but you are doing that subject daily, so that will also keep you motivated and it will boost your confidence. Then yes, from August you will start your first revision. May, June, July, 3 months are more than enough to complete all the 19 subject in first read. अगर पढ़ा नहीं है कभी then also 3 months are more than enough. If you study 7 to 8 hours daily, this timing of 3 months is more than enough to complete those 19 subjects. Then you will start your first revision from August. सेम वे जैसे तुमने फर्स्ट रीड की थी लाइक सब्जेक्ट वाइज वैसे ही सेम रखना है. एनाटॉमी, सर्जरी, ENT जो तुमने फर्स्ट रीड में जो फॉलो किया था वही पैटर्न रखना है. सिर्फ डेज डिक्रीज हो जाएगी. एनाटॉमी यू विल डू इट इन 4 days, सर्जरी 5 days, ENT 3, OBGY 5 days बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. फिजियोलॉजी 3, बायोकेम ऑल्सो 3 days, पीडियाट्रिक ऑल्सो 3 days. सो ऐसा मैंने टाइमिंग दिए है फॉर जो मेन सब्जेक्ट है लाइक PSM, सर्जरी, OBGY से 5 days दिए, बाकी को 3 and 4 days में ख़त्म कर लो. एंड जो स्मॉल सब्जेक्ट है इसको अलग से टाइमिंग रखा है 2 days का एंड इसमें मैंने कोई टाइम स्लॉट नहीं रखा है. सो तुम्हारा सिर्फ लाइक जो मॉर्निंग का टाइमिंग होगा 8 to 9:30 ये तुम्हें कंटिन्यू रखना है. मेडिसिन रिवाइज करते रहना है. ओनली आफ्टर दैट from 10 till night till 10 from 10 AM to 10 PM you will do the main subject only. इसे रिवाइज करना है. अब रिवाइज करना है इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो फर्स्ट रीड में किया है उसे पेज टू पेज पढ़ते बैठो, ये नहीं करना है. यू विल गो थ्रू द PYQs देखो, जो टॉपिक है उसे नोट डाउन कर लो और उस टॉपिक को और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है उसके आसपास जो भी है वो सब कर लो. रिवीजन मैंने 51 डेज़ की रखी है. सो अगर तुम नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो इन 51 डेज, कुछ 10 और 11 बफर डेज है, सो यू कैन यूज़ दैट बफर डेज. यू कैन ऐड
extra days for some subject, or if someday you are not able to study, so you can use that buffer days and just complete your first revision. Remember not to go through the whole notes, just focus on important points and PYQs. And in the revision, your main focus should be in solving maximum MCQs and PYQs, giving more focus to the important topics. Then yes, next is GT. अब मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो GTs से डरते हैं या फिर GTs नहीं देते बिकॉज दे हैव नॉट completed 19 सब्जेक्ट, they have not completed the revision and all. सो ऐसे नहीं करना है. GTs तुम्हें स्टार्ट से देने हैं. मैंने GTs तभी दिए थे जब भी मैंने एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, एंड आई वॉज एट सम मार्क ऑफ 146 और 147. सो तुम्हें देने हैं GTs. So why GTs are so important? Because GTs are the one that will analyze your preparation, that will tell you your weak subjects, that will tell you your strong subjects. So your main focus, the main plan of giving the GTs are this, because it tells you your weak subject, your weak points, and that is more important. No one will come and tell you this is your weak subject, this is your strong subject. Until you will not give any GTs, you will not understand where you stand, what are your weak subject, where you have to memorize. कभी कभी होता है कि हम एक ही क्वेश्चन हर टेस्ट में रॉन्ग करते हैं. देन दैट इज द पॉइंट वेर यू शुड रिमेंबर दैट टॉपिक, दैट थिंग. So in this way, GTs helps you to just tell you your weak points, your weak subjects. That's why giving GTs are very important. The above planner, I have not mentioned GTs anywhere. So तुम GTs कब दोगे? So you are starting your preparation in the month of May, June and July. So this is your first read. सो अगर तुम्हारे इन गिवन टाइम इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट एंड जो बफर डेज बच रहे हैं, सो ट्राई टू डू एटलीस्ट गिव वन GT इन मे, 1 GT in June, 1 GT in July. So you will use that buffer days which I have kept extra. That days you can use to give your GT. But in case you are not able to use that, or you have used that buffer days for any subjects, it is okay. So then you will give your GTs on the day when you will not feel to study. Like there will be days where you will not even feel to open the book. कुछ भी करने का मन नहीं होगा. You will just get burnt off. You will just get irritated. तो उस दिन को तुम्हें यूटिलाइज करना है by giving GTs. Both the parts you have to give on that day. Only 2 hours का test है. So just sit and give that GT. And by looking at the score, any score, it will be like 150 से कम हो, 130 से कम हो, 120 से कम हो, don't get demotivated. Remember, GTs are to tell you your weak point, to tell you your weak subject, to tell you where you should focus more. So don't get demotivated while seeing the score, and don't stop giving your GTs. स्कोर कम हो ज़्यादा हो, रिमेंबर यू हैव टू कीप गिविंग योर GTs, because only GTs will tell you where are you standing in your preparation, and that is the most important thing one should know while they are preparing for any exam. So you will give three GTs, then August and September, you are doing your first revision. So at least try to give 3 GTs here, because यहाँ पे मैंने I guess कुछ 11 days buffer days रखे हैं. Try to utilize some 3 days for giving GTs and reviewing that GT on that same day. Then in the month of October and November, here also you can give 3 GTs. You will give 3 GTs in this month. सो अक्टूबर एंड नवंबर के लिए मैंने कोई भी प्लानर नहीं बनाया, बिकॉज इन दिस 2 months यू विल मेक योर ओन प्लानर. अगर तुम मई जून जुलाई में तुम्हारी फर्स्ट रेड कंप्लीट कर रहे हो, अगस्त एंड सितंबर में यू आर डूइंग योर फर्स्ट रिविजन, एंड साइड बाय साइड यू आर गिविंग द 6 GTs ख़त्म कर रहे हो, यू विल बी एबल टू एनालाइज योर रिजल्ट. करना है विच सब्जेक्ट्स नीड्स मोर रिविजन. This you will get to know only when you will give the GTs.
and according to that you will make your own planner for October and November. That is your second revision and third revision. So you will make your own planner, and you will be able to make the planning only when you give GTs in this 5 months. So that's why I have not made any planner for you. मैंने खुद भी यही किया था. आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई वीक सब्जेक्ट. रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है. यू हैव टू फोकस ऑन द वीक सब्जेक्ट्स मोर. जो सब्जेक्ट्स वीक है, जिस सब्जेक्ट्स की ज़्यादा रिविजन करने की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है. सो दैट यू विल बी एबल टू डू ओनली व्हेन यू गिव योर GTs. सो don't miss GTs or don't feel fear of giving GTs, of getting less score in GTs. Remember, this is not your main exam. This is the practice for you. That's why you have to give GTs as many as possible. I'm not telling you to give 15 or 20 GTs. Just give one GT per month in the month of May, June, July, and in August and September 3 GTs, or you can also give 2 GTs as per your choice. And then when you will come to October and November, remember, in this 2 months वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है. यू हैव टू फोकस ऑन द मगिंग अप पॉइंट्स, लाइक कुछ टेबल्स, कुछ स्कोर्स, सम स्टेजिंग. इस पे ज़्यादा उसको बार बार रिवाइज करते रहना है इन दिस लास्ट 2 months. एंड ऑल्सो योर मेन फोकस शुड बी ऑन द PYQs ऑफ FMG, PYQs ऑफ NEET PG, PYQs ऑफ इफ पॉसिबल INSAT ऑल्सो. बिकॉज NEET PG और FMG भी अभी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम टॉपिक, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोनों एग्जाम में. सो ट्राई टू फोकस ऑन PYQs मोर. PYQs पे स्टार्टिंग से ही ज़्यादा फोकस करना है. व्हेन यू आर जस्ट लाइक बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट, एज आई सेड, आई एम टेलिंग इट थर्ड और फोर्थ टाइम. PYQs करने हैं, PYQs देखने हैं, PYQs सॉल्व करने हैं. Then you will note down that points of particular topic, and then while doing the main subject, you will do that topic thoroughly. So in this way, you have to give focus on PYQs and on your GTs. So that's it. Thank you. I hope this planner helps you to analyze your own planning and how you should plan for your exam. So I'm not telling you to use the same planner. Just take some help. Like many students don't know how to plan the 19 subject, how to plan the timings, how to plan the GTs. Many students find it difficult. Even I used to find it difficult. So this was the plan which I followed, and it was helpful for me. So that's why I've shared it with you. I hope it works for you. I hope it helps you in any possible way. And yes, one more thing. Every day at night, just before going to the bed, for like 1 hour or 30 minutes before, then you will just go through the images. You can use any platform for the images, any PDFs which are available on Telegram. You will just go through the images every night before going to the bed. So yes, that's it. Thank you, and all the best.